we heartily welcome all of you in today's morning class. And today we have a very, very special speaker among all of us. His name is Prithu Prabhupada. Small introduction. Prabhuji got connected with International Society for Krishna Consciousness on 1st January 1972 in Germany, Hamburg. Prabhuji read Ishopanishad in one night, joined the temple next day, and within 6 weeks he became the temple president. And since then, thousands of books have been distributed, thousands of Sankirtan has been organized. Prabhuji has been the temple president of a number of temples in ISKCON. Converted about 500 Christians to Krishna consciousness. Converted about 500 Christians to Krishna consciousness. Prabhuji बता रहे हैं कि 500 Christians को कृष्ण भावना में बदल चुके हैं. Prabhuji is writing one book also, which is in the process of being published. The title of that book is Jesus in the Eyes of Vedic Literature, specifically to target converted Hindus who got converted into Christianity in India, to preach to them. So Prabhuji travels in European countries and now he's going to Russia also for preaching. And importantly, he has a very, very old and intimate connection with our temple. Earlier times, Prabhuji used to live with Sri Swami Maharaj in our old temple there, with Radhika devotees. And we get to have association of Prabhuji when we go in Navadvip Mandal Parikrama. There we get association in form of Srimad Bhagavatam class and his wonderful discourses during Parikrama. So let us heartily welcome His Grace Prithu Prabhu by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I'm supposed to read from the Prabhupada Lilamrita today. तो मुझे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ना है. From where? From here? Ah. Srila Prabhupada's stay at ISKCON Mayapur had been quiet, but as the GBC men arrived from the West, he heard the latest news of the fierce opposition to Krishna consciousness in America. Krishna Goswami and Brahmananda Swami, coming from New York, reported that the case in which ISKCON Swami being charged with mind control would be heard later in March, and that the judge has given ISKCON permission to come and see Srila Prabhupada. They also told Prabhupada that several other devotees had been kidnapped, and that in some cases parents had secured legal conservatorship through judges to abduct the devotees. It was a very severe situation at that time that a court case was filed by our opposition, very demonic. उस समय बहुत ही तीव्र बहुत गंभीर अवस्था थी जब एक कोर्ट केस किया गया था इस कोर्ट के ऊपर. And that our devotees are not voluntarily come to the movement, that we have been brainwashing them. और ऐसा आरोप था कि जो भक्त लोग हैं वो अपनी इच्छा से इस आंदोलन को जॉइन नहीं कर रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है. And so Srila Prabhupada liked that actually. He said, yes, we are washing brains. The brains are very dirty. And it's true, when somebody comes, we help him to make a decision. Somebody comes, we help him to make a decision. अगर कोई आता है और उसको चुनाव करने में हम मदद करते हैं. And we help a devotee to become steady, because when a devotee joins, a young bhakta, his mind is spinning like this.
और जब उस युवावस्था में व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा चीजें So as a, भरे होती हैं. how many times I had to pacify a bhakta who was just leaving, he wanted to go. तो प्रभु जी बता रहे हैं कितनी बार मुझे किसी भक्त जो छोड़ के जा रहा है उसको संभालना पड़ता था. So there was a joke among us actually when somebody joins. Like this. And he says Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. तो इस प्रकार का एक चुटकुला था उस समय जैसा प्रभु ने करके दिखाया. So there was fierce opposition and it was dangerous for our movement. But then so many scholars in America spoke up. तो इस समय इसलिए इतना कड़ा विरोध था इस आंदोलन के प्रति और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस पर सम्मिलित हुए. One must say in America we always had the scholars on our side. तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्कॉलर्स हैं वो हमेशा हमारी तरफ रहे हैं. Because most of them they studied Vedic philosophy very deeply. क्योंकि उनमें से अधिकतरों ने जो वैदिक दर्शन है उसको बहुत गहराई से पढ़ा होता है. Like Professor Hopkins, he knew about Lord Chaitanya, he knew about Caitanya Charitamrita, and he knew about Srimad Bhagavatam. उदाहरण के लिए जैसे प्रोफेसर हॉकिंस हैं तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के So when there was news that a Swami had arrived in New York who was preaching Bhagavad-gita, he went there. और जब ये खबर उन तक पहुंची कि एक स्वामी आए हैं भारत से और वो भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं तो वो वहाँ पर गए. And he saw that the young people were very enthusiastic but didn't know the whole philosophy perfectly. और उन्होंने देखा कि जो उनके युवा फॉलोअर्स हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं परंतु उनको दर्शन नहीं पता ठीक से. But he was impressed that they were so enthusiastic and so determined. परंतु वो इससे बहुत प्रभावित थे कि वो इतने उत्साहित हैं और इतने दृढ़ निश्चय हैं. And then he saw Prabhupada's Bhagavatam, immediately couldn't believe it, published in English, he immediately bought all three. और तब उन्होंने देखा प्रभुपाद जी की भागवतम को और वो विश्वास नहीं कर सके कि अंग्रेजी भाषा में भागवतम उपलब्ध है तो उन्होंने तुरंत तीनों वॉल्यूम्स खरीदी. Because there was no Bhagavatam translation into English language before. क्योंकि इससे पहले अंग्रेजी भाषा में भागवत का अनुवाद नहीं हुआ था. And then when he met Srila Prabhupada, the whole thing makes sense to him all of a sudden. और जब वो श्रीला प्रभुपाद जी से मिले तो पूरा का पूरा जो वहाँ की अवस्था थी तब उनको समझ आने लगी. And so he became one of our big supporters in the United States. और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो हमारे बहुत बड़े सहायक बने. They all became very close friends with Srila Prabhupada. वो सारे श्रीला प्रभुपाद के साथ बहुत गहरे मित्रता का संबंध. There was Professor Stilchan Judah, he was another person that supported our movement. एक और प्रोफेसर थे मिस्टर जूडा तो उन्होंने भी आंदोलन को बहुत सपोर्ट किया. And he wrote a book about the Hare Krishna movement. उन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन से संबंधित एक बुक भी लिखी. And even in Germany, we brought Prabhupada together with scholars. और जर्मनी के अंदर भी हम वहाँ के स्कॉलर्स को इकट्ठा किया प्रभुपाद जी से मिलने के लिए. There was one famous scholar, his name was Professor Durkheim. प्रोफेसर Durkheim. That's his name. Yeah. तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे इस नाम से. He was very famous because he brought Zen Buddhism to Europe. वो वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर थे. He was a Zen Buddhism. He studied in Japan for 10 years Zen Buddhism. तो उन्होंने जापान में zen बुद्धिज्म को 10 वर्ष तक पढ़ा था. During his time when he was ambassador for Germany in Japan. और अपने समय में वो जर्मनी के एम्बेसडर थे जापान के अंदर. He comes from a very famous old aristocratic family. और वो बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही पुरानी बड़े घराने से. And he was very intelligent. और बहुत ही बुद्धिमान. I saw that because you know what a riddle is? A riddle? Riddle. Yeah. तो मैंने देखा है कि एक पहेली. Riddle. It's riddle. I asked him if he can solve this riddle for me. तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे लिए ये पहेली सुलझा सकते हो? Because I gave this riddle to many devotees, nobody could solve it. मैंने ये पहेली बहुत से भक्तों को दी थी, कोई इसको सुलझा नहीं पाया था. Even our GBC couldn't.
और जीवीसी भी नहीं इसको सुलझा पाए। So I gave him the riddle. He thought 2 minutes. He said, "Yes, I know how it goes." He had it. तो उसने 2 मिनट के अंदर उस पहेली को सुलझा दिया। So he was vastly intelligent and he was very humble. He was a very aristocratic, very nice person. तो बहुत ही बुद्धिमान थे, साथ ही बहुत विनम्र थे, बहुत ही aristocratic व्यक्ति थे, बड़े घराने से थे। So I remember I was functioning as a translator there. That Prabhupada asked him, "Professor Durkheim, I'm so glad you came. What is your philosophy?" तो क्योंकि मैं अनुवाद कर रहा था, तो इसलिए मुझे पता है, श्रीला प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्योंकि अब यहाँ पर आप आए हैं, तो आपका क्या दर्शन है? Prabhupada always would ask this question, "What is your philosophy?" प्रभुपाद हमेशा ये प्रश्न पूछते थे कि आपका philosophy क्या है, आपकी दर्शन क्या है? Just like one time in India, in Delhi, one Indian person asked Prabhupada, "Do you know such and such Baba?" जैसे कि भारत में, दिल्ली में ही एक व्यक्ति ने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा, क्या आप इन तथाकथित बाबा जी को जानते हैं? And Prabhupada said, "Never heard of him." श्रीला प्रभुपाद ने कहा, कभी सुना नहीं उनके बारे में। "But he's very famous," the man said. तो उस व्यक्ति ने कहा कि परंतु बहुत प्रसिद्ध हैं। And Prabhupada said, "What is his philosophy?" प्रभुपाद जी ने पूछा, उनका क्या दर्शन है? He says he's God. तो उनका कि वो कहता है कि वो भगवान है। Prabhupada said, "I want to see God." प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। "Do you have his picture?" क्या आपके पास उनका चित्र है? Man showed him the picture. उनको चित्र दिखाया So गया। man was hair like this. उसके वैसे बड़े-बड़े बाल थे। And Prabhupada said, "That's not God, that's an ugly old man." God is always young, never yovanamsha. He never gets old. भगवान नहीं है, ये तो बहुत ही बदसूरत महिला है। He was very funny like this. Old man, sorry, बदसूरत बूढ़ा व्यक्ति है। भगवान हमेशा युवक होते हैं। Sometimes he would make remarks like this, funny remarks. वाक्य बोला करते थे। Like one time, Prabhupada was driving into Calcutta with Shyama Sundar. एक बार श्रीला प्रभुपाद कलकत्ता में जा रहे थे श्याम सुंदर प्रभु के साथ। And there was a famous personality from Bengal. He had a turban. He was standing like this. On all the pictures. I won't name the name. और बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्ति थे, उनके पगड़ी पहनी हुई थी और ऐसे हाथ कर। And Prabhupada said, "Do you see what he is saying?" तो उन्होंने तो अचानक कहा, क्या तुम देख रहे हो कि उन्होंने क्या कहा? Shamashura said, "No, I don't see anything." तो कहा नहीं, मैं कुछ नहीं देख। Prabhupada said, "Look again here, attentively. He says something." तो प्रभुपाद ने कहा, दोबारा देखो उस चित्र को, वो कुछ कह रहा है। Then Prabhupada said, he says, "I'm fool number one." प्रभुपाद ने कहा कि वो कह रहा है कि मैं एक दर्जे का मूर्ख हूँ। Everybody knows who that is, right? So in any case, Prabhupada could be very funny. So when he met this professor, he asked this question, and this professor was very, very trained in Asian spirituality, namely Zen Buddhism, and he spoke very nicely. He was so influential in Germany that he had more than this is how I caught the attention of him. He had more than 30 Catholic bishops listen to him in retreats. They would go regularly in Zen because they were all in their mind like this and disturbed, couldn't sleep at night. And so they went to him for meditation. 13. When I read that, I said, "That's the man. If he is the guru of the Catholic Church, practically speaking, then Prabhupada should become his guru." तो वो जो व्यक्ति थे वो इतने उसका प्रभुत्व था कि 30 कैथोलिक बिशप्स पादरी उनके रिट्रीट में जाते थे मेडिटेशन लगाने के लिए। Bishop, much higher than Padre. Bishop next, after the Pope, there's Bishop. जो सबसे ऊंची पदवी है उसके बिल्कुल अगली पदवी बिशप्स होती है। तो ऐसे 30 पूरे जर्मनी के बिशप्स उससे प्रशिक्षण लेने जाते थे कि कैसे ध्यान लगाना। उन सबका एक तरह से वो गुरु था। तो प्रभु ने सोचा कि इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी को इनका गुरु बनना है। So Prabhupada asked him, "What is your philosophy, Professor Durkheim?" तो श्रीला प्रभुपाद जी ने पूछा कि प्रोफेसर आपका क्या दर्शन है? And so Durkheim spoke.
तो इसलिए उन्होंने उत्तर दिया बहुत very eloquent. He explained Mayavad philosophy. और वो मायावाद सिद्धांत था सारा. And then Prabhupada said, when Durkheim asked him after some time, because Prabhupada wouldn't say anything, and so he said, Swamiji, what do you think of this? तो फिर प्रभुपाद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया. तो उस प्रोफेसर ने खुद पूछा कि स्वामी जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? Prabhupada smiled and said, not very intelligent. प्रभुपाद मुस्कुराए और बोला इतना बुद्धिमता दर्शन नहीं है ये. So Durkheim was shocked. तो वो प्रोफेसर He said, why Swami you say that? He didn't take it wrong. He smiled and said, Swami, why are you saying that? तो उन्होंने इसको गलत नहीं लिया. उन्होंने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? And then Prabhupada spoke wonderful Vaishnava Siddhanta. और फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत किया. He went on and on and on talking about Vaishnava Siddhanta. और निरंतर वैष्णव सिद्धांत के बारे में बोलते गए. Durkheim was under shock when he heard this wonderful philosophy. और उनको ऐसा झटका लगा ऐसा अद्भुत सिद्धांत सुनकर. Because in Western countries religion is not very philosophical. क्योंकि पाश्चात्य देशों में जो धर्म है इतना ज़्यादा दर्शन पे आधारित नहीं है. It is pious, it is sentiment, but there is no defined concept of the soul. वो थोड़ा बहुत पायस एक्टिविटीज पे आधारित है, भावों पे आधारित है, परंतु एक बहुत ही सशक्त दर्शन उसमें नहीं प्राप्त होता. Some look at the soul as amazing, some describe the soul as amazing, some hear of him as amazing, and others don't understand. So there is really in Western religiosity, whether it's Muslim or whether it's Jewish or whether it's Christian, defined understanding of the eternal nature of the soul. विशेषकर जो आत्मा का जो ये गुह्यतम दर्शन है, इसका कोई स्पष्ट वहाँ पे समझ इतनी ज़्यादा नहीं है अन्य धर्मों में, चाहे क्रिश्चियनिटी ले या इस्लाम ले. Like a decree was passed in 530 AD. तो 530 AD में एक ऐसा डिक्री हुआ था. A decree of the Council of Constantinople. That's Decree of Council of Istanbul. Now Istanbul. And so the decree was, whoever believes in the pre-existence of the soul, he goes to hell. और उसके अनुसार जो कोई भी आत्मा के विषय में पहले से विश्वास करता है वो नरक जाएगा. So that means everybody, including Krishna, is on his way to hell. Yasadeva, Krishna, Buddha, everybody who is somebody, Narada Muni, they are all condemned. इसका अर्थ ये है कि सारे के सारे क्रिश्चियंस और जितने भी नारद मुनि, कृष्णा, राम, ऐसे जितने भी हैं, ये सब पहले से ही भर्त्सना कर दी गई. And it was voted upon. It is a majority vote. और मेजॉरिटी ने वोट किया था इस श्लोक के ऊपर. You see, you cannot vote on truth. You cannot vote on truth. देखिए ये बात समझिए कि सत्य के ऊपर आप वोट नहीं कर सकते. And besides that, Krishna says in the Bhagavad-gita, there are two types of men. Some are fallible and some are infallible. In the material world, everyone is fallible, and in the spiritual world, everyone is infallible. और भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, शर और अशर. तो जो भौतिक जगत में जितने लोग हैं शर है और आध्यात्मिक जगत में अशर. Why are they fallible in the material world? Why are they fallible? तो भौतिक जगत के अंदर वो शर क्यों है? Because they are under the modes of nature. क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के अंतर्गत है. Even 5,000 years ago, Arjuna asked Krishna this question. We have a Bhagavad-gita here? English? English Bhagavad-gita. He asked Arjuna one question. तो उन्होंने अर्जुन एक प्रश्न पूछा. And it goes to show that outside of Vedic Siddhanta, there's only speculation. जिससे हमें पता लगता है कि वैदिक सिद्धांत के बाहर बाकी सब मानसिक गणना है. How do we know what is true? By Guru, Shastra, Sangha.
हमें कैसे पता चलता है सत्य क्या है? Guru-sishya, साधु शास्त्र से। Sadhu, that's right. Yeah, but the principle in this triad, you know what a triad is? Triad in this three truths. जो ये सिद्धांत है, ये जो तीनों का समूह है, गुरु साधु शास्त्र, Is Shastra. शास्त्र। If a guru doesn't follow Shastra, he's not a guru. If a sadhu doesn't follow Shastra, he's not a sadhu. So Shastra is, and that's why Krishna says, Ya Shastra vidimutsidra vatati kamakarata, one who speculates, na sasidima vapnoti, no perfection, na sukham, no happiness, no param gatim, no will achieve the supreme destination. तो अगर गुरु शास्त्र को नहीं उसका पालन कर रहा तो वो गुरु नहीं है, अगर साधु का व्यवहार शास्त्र पे आधारित नहीं है तो साधु नहीं है। तो इसलिए जो शास्त्र है ये असली सिद्धांत सत्य को प्रस्तुत करते हैं, और इसके बाहर जितनी चीज़ें वो कल्पना है, और इस मानसिक कल्पना से व्यक्ति को उसके आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। So Arjuna asked this question. तो अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principle of scripture? ऐसे लोगों का क्या गति है जो शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं मानते, But worship according to their own imagination. There you have it. परंतु अपनी कल्पना के अनुसार आराधना करते हैं। This is a common sense. I mean, people, when they're not trained in scripture, they worship God according to their own imagination. और ये बिल्कुल आम सी बात है, अगर लोगों को शास्त्रों के अनुसार प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा, वो अपने अपने मत के अनुसार ही In India also. और भारत में भी People imagine this person to be God, that person to be God. There's always some God. लोग कल्पना करते हैं कि ये व्यक्ति भगवान है, ये व्यक्ति भगवान है, कुछ ना कुछ प्रकार की मानसिक गणना लगी रहती है। When I was living in India, जब मैं भारत में रह रहा था, I stayed in India about 6 years. मैं 6 वर्ष तक रहा भारत में। Very hot. बहुत गर्म था। In fact, we had 55 degree in Vrindavan. वृंदावन में जो टेम्परेचर था 55 डिग्री था। So I called the Goodrich company in Mathura to deliver a fridge with a huge freezer inside. तो मैंने मथुरा से एक बड़ा फ्रिज ऑर्डर किया जिसमें बहुत बड़ा फ्रीजर था। So every 10 minutes I would go and stick my head into the freezer. तो हर 10 मिनट बाद मैं फ्रीजर में जाके अपना सर उसमें to survive. So in any case, we went always, our idea was from the 1st of May on, it became impossible, we went to Manali. और 1 मई के बाद तो वहाँ पे रहना असंभव हो गया, इसलिए हम वहाँ से फिर मनाली गए। It's the only Manu temple in all of India. पूरे भारत में एक मनु का मंदिर वहीं पर है। And on the other side is Vashisht, that's the place where Vashisht was living, the guru of Ram. और दूसरा वशिष्ठ जी का वहाँ पर आश्रम है जो राम जी के गुरु थे। And even the Pandavas came there. If you look up the mountain, you see very clearly there's some structure was there. It's called Pandu Rope, the place where the Pandavas lived. तो अगर आप वहाँ से देखेंगे तो पहाड़ के ऊपर बहुत स्पष्ट एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जहाँ से पांडव ने स्वर्गलोक गए थे। Beautiful Ram temple there. बहुत सुंदर राम मंदिर है। Hot springs. और झरने हैं। So on the other side, there is a temple of Hidimba. और हिडिंबा का वहाँ पर मंदिर है। Hidimba is Rakshasa. हिडिंबा एक राक्षस था। And Bhima had to marry the sister of Hidimba. और भीम को हिडिंबा की बहन से शादी करनी पड़ी थी। So we came there early in the morning. They just had finished the sacrifice. तो हम सुबह जल्दी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे यज्ञ खत्म ही किया था। And there were hundreds of animals were offered right in the temple. They had some sort of vessel, cut head, everything. और मंदिर के अंदर 100 से अधिक पशु की बलि चढ़ाई जा रही थी। Of course, okay. And there was a little pipeline coming out. और वहाँ से एक पाइप बाहर जा रही थी। And people took from that. और लोग वहाँ से प्रसाद ले रहे थे। One old man came to me and said, "You should take this." एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया, बोला आपको ये लेना चाहिए। I said, "What is that?" मैंने पूछा ये क्या है? It's Charnamrit. चरणामृत। It was blood. It was blood. I thought, you must take.
तो मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं इसको ले सकता हूँ। क्यों नहीं? तुम्हें लेना चाहिए। I said, Prabhu, I'm fasting today. तो मैंने कहा प्रभु मेरा आज व्रत है। So that saved me. तो इसलिए मुझे बचा लिया। So people that need the idea to worship this God, that is very common to human beings. तो इसलिए लोग अपने अपनी कल्पना के अनुसार कभी इस भगवान को कभी उस भगवान को पूजा करने के सिस्टम बनाते हैं। Even 5,000 years ago in Krishna's time, 5000 वर्ष पूर्व भी कृष्ण के समय भी Arjuna raised this question. अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। And Krishna answered, O son of Bharat, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्रकृति के गुणों के हिसाब से जो उसका पोजीशन है उस हिसाब से उसका जो श्रद्धा है वो विकसित। The living being is said to be of a particular faith according to the modes he has acquired. तो जो जीवात्मा है अपने अपने गुणों के अनुसार अपनी श्रद्धा आस्था किसी में रखती है। There is food also in the mode of ignorance. तो जो तमोगुण में भोजन भी होता है। Food in the mode of goodness, food in the mode of passion, food in the mode of ignorance, and killing animals is in the mode of ignorance. तो सतगुण, रजगुण, तमोगुण में भोजन होता है और जो पशुओं की बलि दी जाती है तमोगुण का। But all Western religiosity, with some exceptions, और इस सब धर्म के नाम पर होता है। they're meat eaters. They eat meat eaters. Meat eaters. Yeah, the Western all eat meat. और जो पाश्चात्य देश में जितने धर्म हैं सब वो meat eaters हैं। So according to that, they're not. According to Vedic standard, they're not civilized. तो वैदिक ग्रंथ के अनुसार वो सभ्य नहीं है, असभ्य है। So Prabhupada explained to Durkheim the power of human imagination. The power of human imagination. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने उस प्रोफेसर को समझाया कि मनुष्य की मानसिक गणना की क्या शक्ति है। And what he was talking about, this professor was just the product of a very fertile human brain. और जो भी ये प्रोफेसर बातचीत कर रहा था ये बस उसके दिमाग की उपज थी। It was mental speculation. वो सब मानसिक कल्पना थी। And so the professor grew more and more attentive, and in the end he was so impressed, he jumped up and paid a complete dandavat in front of Prabhupada. तो वो जो प्रोफेसर था वो धीरे धीरे और शरणागत होता गया और अंत में वो इतना उत्साहित था इस सिद्धांत को सुन के कि उसने पूरा दंडवत प्रणाम किया। World famous person. और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था। In every department of psychology in America, I saw his picture because he was also a psychologist. तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में उसका एक चित्र रहता था। So he was 2 months younger. He was born in 1896 like Prabhupada, but Prabhupada was born 2 months earlier than him. तो श्रीला प्रभुपाद से 2 महीने छोटा था। So Durkheim took his foot and said, Swamiji, please accept me as your younger brother. तो उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को कहा कि स्वामी जी कृपया मुझे छोटे भाई के रूप में स्वीकार कीजिए। And so in the next couple of days they would walk around, they would talk a lot. Durkheim loved Prabhupada. और अगले कुछ दिनों में वो साथ सैर पे जाते थे, आसपास बातचीत करते थे और वो प्रभुपाद जी से प्रेम करने लगे। And I'm telling this story because when I brought him to the railway station, he said something really wonderful. तो मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं उसको रेलवे स्टेशन लेके गया तो उसने बहुत अद्भुत बात कही। And he said, I have met, he said, Prithu Das, I met in India many sadhus, many rishis, many highly placed personalities of Godhead, even gurus, even in the Western world, so many high-class people, but I never met a person like your spiritual master. तो उन्होंने कहा कि पृथु प्रभु मैंने भारत में बहुत से संतों, ऋषियों, गुरुओं से मिला हूँ, अन्य देशों में भी ऐसे लोगों से मिला हूँ जो धर्म में बहुत ऊंची पदवी रखते हैं, परंतु मैं ऐसे किसी कोई भी श्रीला प्रभुपाद जैसे नहीं है। I was very cautious initially. मैं शुरू में बहुत सावधान था। I didn't know what to think. तो मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। But then my conclusion came that he is a complete self-realized person. तो परंतु मेरा निष्कर्ष ये निकला कि वो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार। Said, I never met a person like this in my whole life. It is a great day for me. अपने पूरे जीवन में ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला, तो ये मेरे जीवन का बहुत ही सर्वोच्च दिन है। You see, this was a very intelligent man. आप देखिए बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। He immediately surrendered.
तुरंत वो शरणागत हुआ। You know, whereas other people, Prabhupada would talk for them for hours, they couldn't really grasp it. Big religious leaders. अन्य लोग साथ श्रीला प्रभुपाद घंटों घंटों बातचीत करते थे, बड़े बड़े धार्मिक नेता थे, परंतु कुछ पता नहीं पड़ता था। Because the first thing we learn in spiritual life, the first question is really, who are you? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो पहला प्रश्न हम जिसको सीखते हैं वो है कि आप कौन हैं? Atatu Brahma Jignasa is the first verse in Brahma Sutra, in Vedanta Sutra. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का पहला सूत्र है। Now it's time to explore the self. अब वो समय है कि अपने आप को साक्षात्कार में लगे। Now, even 3,000 years ago, there's one famous temple in Greece, the Greece of Apollo. 3000 वर्ष पूर्व भी ग्रीस में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था, ग्रीस of Apollo. And somebody had, you can see it even nowadays, somebody took a knife or something, cut into the wall. और आप आज भी देख सकते हैं किसी ने चाकू लेके वहाँ के दीवार में कुछ लिखा है। It says, realize yourself. और वो क्या लिखा है कि स्वयं का साक्षात्कार करो। So they had, in Greece philosophy, there's a difference between the body and the soul. Very clear. तो ग्रीस दर्शन में भी शरीर और आत्मा में भेद किया जाता है। When the great philosopher Socrates was condemned to death, जो सोक्राटिस था उसको मृत्यु दंड घोषित कर दिया गया था। they gave him poison. उनको जहर दिया गया They asked him to drink it. और उसको पीने के लिए बोला गया। He said, I will drink it, but you cannot catch me. उसने कहा कि मैं इसको पीऊंगा परंतु आप मुझे नहीं पकड़ सकते। They said, why? Because I'm not this body. उसने कहा क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। Because at that time, the influence of Vedic culture was still there in Rome. And क्योंकि उस समय जो वैदिक संस्कृति है उसका प्रभाव तब भी उपस्थित था। maybe not in Rome, they were not so philosophical, but there is one Roman emperor, when he came to Europe, to Germany particularly and France, he wrote about the religion there. तो हो सकता है रोम में उस समय नहीं इतना दर्शन प्रचलित हो, परंतु जब वो जर्मन और फ्रांस में गया तो वहाँ पे धर्म के ऊपर ग्रंथ लिखा। It is written in his book, it's called The War Against the Celts. Celts were the religious people of that time. और उसने पुस्तक लिखी The War Against Cults. Celts is the religiosity of वहाँ पे Europe. जो धार्मिक लोग थे They were basically sun worshippers. वो मुख्यतः सूर्य की पूजा करते थे। And so he wrote in his diary, he said, they think that the soul can take any form of life. और उसने अपने पुस्तक में लिखा कि वो सोचते हैं कि जो आत्मा है कोई भी शरीर धारण कर सकती है। This Julius Caesar, the emperor of Rome, wrote that. और ये समय रोम के राजा थे, Julius Caesar. Julius Caesar, he said, they believe soul can take any form of life and that the soul takes one body after another. और वो मानते हैं कि जो आत्मा है वो हर एक नए जन्म में एक अलग अलग शरीर धारण करती है। That means they had a very defined understanding of the soul. और उसने कहा कि ये आत्मा की बहुत सूक्ष्म समझ है। Because without having understanding of the soul, you cannot understand who you are. क्योंकि जब तक आप आत्मा को नहीं समझते तब तक आप ये नहीं बता सकते कि आप कौन हैं। You come to the conclusion you're the body. आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आप शरीर हैं। That means you don't know where you're coming from. तब आपको यही नहीं पता होगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। You don't know what you are. आपको ये नहीं पता कि आप कौन हैं। You don't know what your future is. आपको ये नहीं पता कि आपका भविष्य You क्या है। don't even know what to do with your life. आपको ये नहीं पता कि आपको जीवन के साथ क्या करना है। Because the whole life is then based on a false foundation. क्योंकि पूरा का पूरा जीवन एक गलत आधार पर स्थित है। On the what is the foundation of our being? If you have no self-realization, हमारे अस्तित्व का क्या आधार है अगर आप आत्म साक्षात्कार में नहीं लगे? the body. कि आप शरीर हैं। The body is the foundation, and people work very hard to perfect their physical standards. और लोग
बहुत मेहनत करते हैं इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए. But when the tide rushes in, it will take all the castles away. You know the tide? परंतु जब लहर आएगी तो सारे महल उड़ा के ले जाएगी. Like you build a castle in the sand. जैसे कि आप समुद्र के तट पर मिट्टी से रेत से आप वहाँ महल बनाएं. And the ocean comes and everything vanishes. और जब वो महासागर की लहर आती है सब. So in the same way, the whole material world is made like this. इसी प्रकार से पूरा का पूरा भौतिक जगत भी ऐसे बना है. It is unreal. It says in Srimad Bhagavatam, it's unreal. ये unreal है, असत्य. Mrisha. Mrisha. Marisha. No, Mrisha. Mrisha. Tene Brahma Hridaya Arikavai Muyantya Surai Tijavadi Mridam. Amrisha. Yeah, that's it, Mrisha. It is unreal. That's why scientists can never understand the universe, because it is unreal actually. क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो कभी भी सृष्टि को नहीं समझ सकते. It is actually a virtual reality, like in a computer's game. जैसे कि एक वर्चुअल रियलिटी होती है, एक परम सत्य नहीं है. If you play a computer game, you can become completely absorbed. You go into the screen and you play. कि जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई गेम खेल रहे हैं. And you forget all about your existence outside the screen. तो उस स्क्रीन के बाहर का जितना अस्तित्व है आप उसको भूले बैठे. And you suffer, you enjoy, you marry, you buy land, you destroy people. और उस स्क्रीन के अंदर आप लोगों को मार रहे हैं, अलग-अलग कार्य कर रहे हैं. But it's all illusion. परंतु ये भ्रम है. So in the same way, all existence in this material world, whether they are people, whether they are animals, whether they are high people, low people, the material creation itself, mountains, everything is just a virtual reality. इसलिए इसी प्रकार से इस संसार के अंदर भी जितने भी प्रकार की चीजें अवस्थाएं आप देखते हैं, जहाँ लोग हैं, जहाँ ऊंची श्रेणी के, नीचे श्रेणी के अलग-अलग जंतु हैं, ये सत्य के ऊपर आधारित नहीं है. You understand the allegory? क्या आप इस तुलना को समझ पा रहे हैं? Yes. And the whole thing vanishes from one moment from another to another from the screen as soon as Krishna clicks his mouse. और जैसे कि आप एक माउस के बटन दबाने से पूरे का पूरा स्क्रीन खत्म हो जाता है, क्लोज हो जाता है. तो इसलिए लोग बहुत मेहनत करते हैं एक भ्रमित धारणा के पीछे. And they lose everything at the time of death when the house of cards collapses. और मृत्यु के समय सब ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. It is maybe material intelligent. People are highly intelligent materially often. तो हो सकता है लोग भौतिक रूप से बहुत ही बुद्धिमान. You know, just like for example, when it comes to engineering works, the Germans are really good coming from that country. उदाहरण के लिए जब इंजीनियरिंग कार्य की बातचीत होती है तो जर्मन्स उसमें बहुत निपुण होते हैं. We have so many engineers coming from India who work in German companies. BMW is all run by Indians actually. The brain behind it are the Indians. और जितने ये बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं BMW, तो उनके पीछे जो दिमाग है वो सब भारतीयों का होता है. इतने सारे भारत से लोग आते हैं जर्मन में जाके जो जॉब करते हैं. And they tell us that the German engineering is so refined. They have been in America before. Said there isn't a place on the planet where they have such defined engineering. They have mathematical formulas. They are unknown even to the rest of the world. परंतु फिर भी वो बताते हैं कि जो जर्मन्स की इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा बारीक है और इतने निपुण हैं कि उनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह वो और देशों में तो उसके बारे में पता ही नहीं है. But that's just material intelligence. परंतु सिर्फ भौतिक बुद्धिमत्ता है. It is not really intelligent. वास्तविक बुद्धिमत्ता नहीं है. Sangupangastra Pashram Yage Yajanti Sumedasa. Real intelligence is if somebody chants Hare Krishna, that's the most intelligent thing to do. अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो वो वास्तविक बुद्धिमत्ता है. Nothing. There isn't a more intelligent thing to do than chanting Hare Krishna because immediately you associate with God. हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ऊपर कोई भी बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, क्योंकि इस मंत्र से आप तुरंत भगवान के साथ संग कर रहे हैं. That's the most intelligent thing to do, to take shelter in Krishna.
भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है. Rather than using your intelligence to manipulate matter. बजाय इसके कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं एक मैटर को मैनिपुलेट कर रहे हैं. So that's the second thing we learn. Atato Brahma Jignasa first, and then Aham Brahmasmi, that I'm a spirit. और फिर दूसरा आता है अहम ब्रह्मास्मि कि मैं आत्मा हूँ. And everybody knows. और हर एक को पता है. In India, भारत में most people know that they're not the body. को पता है कि शरीर नहीं आत्मा है. That they're spirit soul. तो आत्मा है. Now in Germany, I preach there now since 45 years, 46 years. तो और जर्मनी में मैं पिछले 46 साल से प्रचार कर रहा हूँ. And materially very intelligent. वो भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान है. But the section in the brain that's responsible for spiritual life is a size of a moonbeam. तो दिमाग में जो एक ऐसा पार्ट है जो आध्यात्मिक जीवन के लिए बना है वो बिल्कुल भी विकसित नहीं है. Absolutely dead spiritually. बिल्कुल मृत है आध्यात्मिक रूप. You know, they cannot understand. वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं. And if they accept some religion, they accept a religiosity which is on the bodily platform. और अगर वो कोई धर्म को स्वीकार करते हैं तो ऐसे धर्म को स्वीकार करते हैं जो शारीरिक स्तर पर हो. Because the body is everything for materialists. क्योंकि भौतिकवादियों के लिए शरीर ही सब कुछ है. Demons also, the body is everything. और असुरों के लिए भी. Welfare of the body is the alpha and the omega, the beginning and the end. जो शरीर का देख रेख की उनकी शुरुआत है और वही अंत है. So Prabhupada, first thing he taught Professor Durkheim, he said, and he repeated it about 5 times in this discussion. He said, you're not the body, you're a spirit soul, you're part of God, your duty is to serve God. Now Durkheim, he understood Christianity, but he never heard this concept of being completely different from the body. So प्रभुपाद जी ने उस प्रोफेसर के साथ वार्तालाप में कम से कम 5 बार दोहराया होगा कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आप भगवान का अंश हो, आपका कर्तव्य भगवान की सेवा करना है. हालांकि वो क्रिश्चियनिटी से परिचित था, परंतु उसको ये नहीं पता था कि आत्मा पूर्ण रूप से शरीर से अलग. He had some concept of life beyond the body because he was a Zen Buddhist. तो उनके कुछ धारणा थी कि शरीर के बाद भी कोई जीवन होता है. But basically speaking, the idea is that we are the mind. परंतु वो उसका जो दर्शन था वो ये था कि मैं मन हूँ. And they're very expert in controlling the mind. और वो बहुत निपुण होते हैं मन को नियंत्रित करने में. My sister also, she's actually a grand disciple of this Durkheim. She became. और प्रभु जी बता रहे हैं कि मेरी जो बहन है वो भी वहाँ पर उपस्थित थी जब ये प्रोफेसर दुर्गामा आए. So she is now 78 years and she just made her PhD with 78 years at the university in Madrid. और प्रभु जी बता रहे हैं कि उनकी उम्र 78 इयर्स की है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड में उन्होंने PhD अभी पूरी की है. It's unheard of that somebody in that age writes a PhD. और ऐसा कहीं सुना नहीं है कि इस उम्र में 78 इयर्स में. So she is practicing Zen Buddhism for 40 years and her mind is very sharp, very controlled. वो 40 वर्ष से ज़ेन बुद्धिज्म का अभ्यास कर रही है और उसका मन बहुत शार्प है, बहुत नियंत्रण करती है. And when I introduced her to Krishna consciousness, we went to the temple, a farm near Madrid. I said, how do you like it? What do you think? जब मैंने इसे कृष्ण भावनामृत से परिचित कराया, वहाँ पे पास में एक फार्म है, वहाँ पे लेके गया और मैंने पूछा आपको कैसा लगा? He said, these people, and she said, they're very pious. तो उसने कहा कि ये लोग बहुत pious हैं. And they're very intelligent. और बहुत बुद्धिमान हैं. But they're very spaced out. पूरे spaced out रहते हैं. Spaced out, you know. The mind is going here and there. उनका मन इधर-उधर हर जगह भटकता रहता है. She said they look at one person, talk to another one, and think about another one at the same time. कि वो एक व्यक्ति की तरफ देखते हैं, दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं. And that's true. Devotees are. और भक्तों के साथ में विशेष कर सकते हैं. Prabhupada gave the example that most people are materially and spiritually incapable. श्रीला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अधिकतर लोग भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से असक्षम हैं. And then there are some about those materially and spiritually capable.
They are materially very capable. और कुछ ऐसे लोग जो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सक्षम हैं, वो भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम हैं. And there are very few who are spiritually capable. और उससे भी कम वो लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप से सक्षम हैं. But materially incapable. परंतु भौतिक रूप से असक्षम. He said that's the International Society for Krishna Consciousness. और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत है. He said, and then there are very few who are materially and spiritually capable. और कहा और कुछ लोग ऐसे हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत सक्षम हैं. And there are very few. और बहुत ही कम संख्या. So material intelligence ultimately is not very valuable. तो भौतिक बुद्धिमत्ता अल्टीमेटली इतनी ज़्यादा मूल्यवान नहीं है. Because it entangles us in the material world. क्योंकि वो हमें भौतिक संसार में बांधे रखती है. And they're trying to understand the universe. और वे सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहे हैं. And they never come to a conclusion. और कभी भी किसी conclusion पे ही नहीं आते. Like recently, one famous demon died. जैसे कि हाल में ही एक बहुत प्रसिद्ध असुर की मृत्यु हुई. Professor Hawking. Professor Hawking. He was one of the greatest mathematicians of all times, materially very intelligent. तो भौतिक रूप से वो सबसे महान mathematicians में उनकी गणना होती है. But he was an atheist. परंतु नास्तिक थे. And so he died. तो इसलिए वो उनके मृत्यु. And where he is now? और अभी वो कहाँ है? What did all his knowledge help him at the time of death? क्या उसका पूरा का पूरा ज्ञान ने उसकी मृत्यु के समय सहायता की? It's different for a devotee. भक्त के साथ अलग है. Yam yam vapi smaran bhavam tyadrate antikalevaram tam tami vaiti kauntiyat hadratat bhava bhavita. When the mind is at the time of death, there you will go. तो जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय आप वहीं जाएंगे. When Prabhupada left his body, it was wonderful. I remember minutes ago he lifted up his hand like this. It was very peaceful. It was already. He couldn't breathe. There was mucus gathering. You know, that's the end. I saw my brother die. I saw my father die. तो प्रभु जी से करके बताया तो मैं वो उनके पिता और भाई को शरीर छोड़ते हुए प्रभु जी ने देखा है कि अंत में यहाँ पे म्यूकस सारा अटक जाता है. कब? So then all of a sudden he stopped, lifted his hand, and it took 10 minutes for him to say this one sentence. He said, everything moving and non-moving, there's nothing but Krishna. This consciousness is called Krishna consciousness. और श्रीला प्रभुपाद ने जिस समय से हाथ उठाया और वो 10 मिनट लगे उनको ये वाक्य बोलने के लिए कि जितनी भी चीज़ें जो चलायमान हैं और रुकी हुई हैं सब कृष्ण की शक्ति कृष्ण ही है. That was the last sentence he spoke. ये आखिरी वाक्य था जो उन्होंने बोला. Because he was completely one who sees me everywhere. Yomam pashyati savatra samam chamai pashyati. One who sees me everywhere and sees everything in me. I'm never lost to him, nor is he ever lost to me. जब मैं भगवान कहते हैं कि जो मेरे को हर जगह देखना है तो वो उसके लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ और वो मेरे साथ हमेशा सदैव रहता है. Vasudeva Savamiti Samahatma Sudurlava. Such a soul is very rare who sees God everywhere. ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो प्रत्येक जगह भगवान को देखता है. The second last thing Srila Prabhupada said. Second last thing. इससे पहले का जो वाक्य श्रीला प्रभुपाद ने कहा. He wanted medicine. वो दवाई चाहते थे. So he asked his servant to give him medicine. उन्होंने अपने सेवक को दवाई देने के लिए कहा. And Prabhupada said, "Did you close the bottle?" श्रीला प्रभुपाद ने कहा, क्या तुमने बॉटल बंद की? And this is a man who is almost dying. He asked this question, "Did you close the bottle?" Something so little. अब ये एक ऐसे व्यक्ति है जो अभी शरीर छोड़ने वाला है. वो क्या प्रश्न पूछा है कि आपने दवाई की बॉटल बंद की? And the answer was no, Srila Prabhupada. उत्तर था नहीं श्रीला प्रभुपाद. And Prabhupada said, "That is your disease." श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि ये आपकी बीमारी है. All of you. आप सबकी. You know how to open bottles. कि आपको बॉटल खोलनी आती है. You don't know how to close them. आपको बंद करनी नहीं आती. You start so many new things. आप इतनी सारी नई चीजें खोल देते हो. And you don't see the consequences. और आप उसके परिणाम नहीं देखते. You know how to live. आपको नहीं पता कैसे. आपको पता है कैसे जीना है. But you don't know how to die. परंतु आपको ये नहीं पता कैसे मरना है. And therefore I have to show you how to die. इसलिए मुझे आपको दिखाना पड़ता है कि कैसे मरना. So after that he called Yadubar Prabhu to make this film when he was dying.
और उस समय उन्होंने यदुवर प्रभु को बुलाया वो रिकॉर्डिंग करने के लिए कि वो किस प्रकार से शरीर छोड़ रहे हैं। And when you see the film, you have seen the film? आप में से कितना ने पिक्चर देखी? Yes. The last thing Prabhupada said was Hare Krishna, and he left his body. आखिरी चीज जो श्रील प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्ण और उसके बाद वो चले गए। And we were about 50 people in the room. We cried like anything. हम लगभग 50 ग्रंथन किया। The world lost. It was a loss for the whole world when Prabhupada left. पूरा का पूरा विश्व ने एक बहुत बहुमूल्य चीज को गवा दिया। He had written in hundreds, in so many languages, so many books. कितनी सारी भाषाओं में उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ। Even Shakespeare didn't write as many books as Prabhupada. शेक्सपियर ने भी इतनी पुस्तकें नहीं लिखी जितनी श्रील प्रभुपाद। He went 12 times or 14 times around the world in an old age. इतने बड़ी आयु में पूरे विश्व का उन्होंने 14 बार भ्रमण किया। He initiated more than 5,000 disciples. 5,000 से ज़्यादा शिष्यों को। He gave more than 3,000 lectures. 3,000 से ज़्यादा लेक्चर्स थे। He wrote 15,000 letters. 15,000 पत्र लिखे। And he started about 100 temples. और लगभग 100 मंदिरों के साथ। He was a superhuman being. Super human being. From all accounts I have seen, Prabhupada was a superhuman being. मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि प्रभुपाद एक बिल्कुल सुपर ह्यूमन बीइंग थे। Now, so he was extremely humble. और वो बहुत ही विनम्र थे। I remember one time on a morning walk, I stepped on Prabhupada's heel. मुझे याद है कि एक बार सुबह की सैर पे मैं एक बार प्रभुपाद जी के एड़ी पर मेरा पैर आ गया। I felt so sorry. मुझे क्षमा। So Prabhupada took his stick and he pointed on my breast like that. And he pushed me. श्रीला प्रभुपाद ने अपनी छड़ी ली और मेरी छाती पे लगाया और मुझे थोड़ा धक्का दिया। And then he said to me, "Are you now satisfied?" और फिर पूछा क्या अब आप संतुष्ट हो? I was under shock when Prabhupada said that. और मुझे बहुत शॉक लगा श्रीला प्रभुपाद से सुनकर। Then Prabhupada smiled and said, "No, that's okay. Don't worry about it." श्रीला प्रभुपाद ने फिर मुस्कुराया और कहा कि नहीं घबराओ मत कुछ ठीक है। It was not. He knew that nothing can happen without Krishna's arrangement, so he took it as Krishna's arrangement. और जानते थे भगवान कृष्ण के अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो उसको इसी तरह देखा। And then he asked this question. He said, "How long are you going to stay in Vrindavan?" और फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप वृंदावन में कब तक? I said, "Tomorrow morning, Prabhupada, we go back to Germany." तो हमने कहा कल सुबह हम वापस जर्मनी Because जा रहे we were book distributors. हैं। हम बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। And Prabhupada said, "Oh no, you can't do that. तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। You have to stay at least another 3 weeks." आपको कम से कम 3 हफ्ते और यहाँ रुकना And he चाहिए। looked up into the trees and said, "Just enjoy the spiritual atmosphere." और उन्होंने ऊपर पेड़ों की तरफ अंकित करते हुए कहा कि इस पूरे आध्यात्मिक वातावरण का लुत्फ उठाओ। So Prabhupada gave me a license to enjoy the spiritual atmosphere. तो श्रीला प्रभुपाद ने मुझे लाइसेंस दिया आध्यात्मिक वातावरण का लुत्फ उठाने के। He was extremely high. He didn't take offense. वो किसी प्रकार का अपराध नहीं करते। I remember there was one famous lecture in Uppsala University. Which university? Uppsala University in Sweden. Uppsala Yeah, we're right. Okay. में एक बहुत प्रसिद्ध लेक्चर है। And Prabhupada, it was a very rebellious time. All the students were communists, practically speaking, and so Prabhupada lectured on purpose. Rather than talking about the classless society, we were at that time all anarchists, followers of Bakunin. It was the Russian anarchist Bakunin. So it was a very rebellious audience of students he talked to. और जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का समूह था बहुत ही विरोधाभासी था, प्रैक्टिकली सारे के सारे कम्युनिस्ट। So Prabhupada, he lectured particularly on the 4 classes of men. प्रभुपाद ने विशेषकर टॉपिक चुना कि 4 श्रेणी जो वर्णाश्रम के ऊपर। He said they are first class men, they are Brahmins. कि जो प्रथम श्रेणी के लोग हैं वो ब्राह्मण हैं। The next lower stage are the Kshatriyas, they are second class men. दूसरी श्रेणी के क्षत्रिय हैं। They are third class men, they are the business community. उसके बाद जो वैश्य है। And then Prabhupada said, and then there are fourth class men, and these are the workers. और फिर चौथी श्रेणी के जो लोग हैं वो This सारे was काम करने वाले। just like poison for these students to hear.
उस समय स्टूडेंट्स के लिए ये सब सुनना जहर के समान. So one student said, "Can I ask you a question?" तो एक वहाँ पे स्टूडेंट ने कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? And Prabhupada said, "Yes." प्रभुपाद ने कहा. So he said, "Of course." The student says, "You think you're first class. तो निश्चित रूप से आपको लगता है आप शायद प्रथम श्रेणी में आते हैं. You're sitting on a high seat, आप इतने ऊंचे व्यासासन पर covered बैठे with हैं. flowers. इतने Everybody माला पहनी sits हुई है. at your feet and bows down. और सारे लोग आपके चरणों में हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं. Are you first class? Answer my question." क्या आप प्रथम श्रेणी के हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए. Prabhupada was shocked when he heard that. श्रीला प्रभुपाद को बहुत He was धक्का shocked. लगा ये प्रश्न He सुन के. said, "No, no, like this. No, no, don't think like that. श्रीला प्रभुपाद का नहीं नहीं नहीं, आप वैसा मत सोचिए. I'm not first class. मैं प्रथम श्रेणी का नहीं हूँ. I'm actually fifth class." मैं वास्तव में पंचम श्रेणी का हूँ. And everybody was shocked. It was हर कोई complete silence in the room. बहुत चक्का रह गया इस And then बात को Prabhupada, सुन के. I was sitting there, where Aditya was sitting, and I saw behind Prabhupada's spectacles, he said, "Because I'm the servant of everyone." And then two big tears came down his cheeks. और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरे हॉल में. और प्रभु जी कह रहे मैं वहीं पर बैठा था पास में. तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैं सभी इन 4 श्रेणियों का सेवक हूँ. और फिर उनकी दोनों आंखों से आंसू टपके. There was that silence in the room. पूरे के पूरे कमरे And में everybody looked back at this man as if he were a demon. पूरे के पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया. और हर कोई जिसने प्रश्न पूछा था उसकी तरफ मुड़ के देख रहा था कि जैसे कि ये घूर घूर के देख रहा था जैसे कि बहुत बड़ा राक्षस आ गया. And he sat down, he was very ashamed. और वो शर्म के मारे बैठ So गया. Prabhupada, he could put people ashamed by his humility. तो श्रीला प्रभुपाद अपनी विनम्रता से लोगों को शर्मसार करते थे. At the same time, Prabhupada could be very funny. और साथ में श्रीला प्रभुपाद बहुत हास्यप्रद भी हो सकते थे. Like if I always tell this famous joke that Prabhupada asked, one devotee was saying to Prabhupada, "Srila Prabhupada, I'm thinking." एक शिष्य श्रीला प्रभुपाद को कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ. And Prabhupada said, "Don't do that." श्रीला प्रभुपाद ने इतना ही वाक्य सुन के कहा नहीं नहीं आप सोचो मत. Because he knew that he was speculating. श्रीला प्रभुपाद जानते थे कि कुछ का मानसिक कुछ चल रहा है उसका. So outside of the Vedic conclusion that comes all the way from Brahma, Tene Brahma Ridaya Adikavayi Muyante. So from Brahma, the Adikavi, the first teacher of the world, all the way to Narada and to Vyasa, and then from there so many Madhva Acharya, finally Srila Prabhupada, a whole chain of disciplic succession. तो जो पूरी की पूरी परंपरा है जो ब्रह्मा जी से शुरू हो रही है, नारद मुनि व्यास देव से जो पूरी की पूरी परंपरा आ रही है श्रीला प्रभुपाद जी तक. And in this way we hear Shabda Brahma. इस प्रकार से हम शब्द ब्रह्मा श्रवण करते हैं. When Sakala Niyamata Yoganashta Parantapa, when that disciplic succession is broken, there is no knowledge. और जब ये परंपरा टूट जाती है तो कोई ज्ञान नहीं है. And you cannot even explain why people suffer. और आप इसको भी नहीं समझा पाते कि लोग क्यों पीड़ा में हैं. Even when I was a young boy, I always tell this story when I come to this point. My brother died of cancer. कि मैं हमेशा ये कहानी सुनाता हूँ कि जब मेरा जो भाई है वो कैंसर से उसकी मृत्यु हुई. He was only 7 years old. 7. उसकी आयु उस समय सिर्फ 7 वर्ष की थी. And I was 12. और मेरी 12. So the boy was just died there. और एक लड़का जिसके And the मृत्यु हुई. priest was there in black clothes. और वहाँ पे जो प्रीस्ट था काले कोट में था. And I said, "Father, why did my brother have to suffer like this? Where is God in all this?" तो मैंने पूछा फादर मेरे भाई को इस प्रकार से क्यों मरना पड़ा? कहाँ है आपका भगवान? What an intelligent question. So what has he done that he has to suffer so much? उसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से उसको इतनी पीड़ा सहन करनी पड़े? He said, "I don't know." उसने कहा कि मुझे नहीं पता. So he has not done anything. कि उसने कुछ नहीं ऐसा किया. Because I said, "But it says in the Bible, as you sow, you will reap." परंतु मैंने उनको कहा कि बाइबल में लिखा है जैसा बोगे वैसा पाओगे. What has he sown? He was just a young child that has to reap like this, such a reaction. ने ऐसा क्या चीज बोई है कि वो अभी तो सिर्फ 7 वर्ष का था. I said, "We don't know the answer."
तो उसने कहा कि हमें इसका उत्तर नहीं पता। And I said to him, Father, you just made me an atheist. तो मैंने कहा कि फादर कि आपने मेरे को एक नास्तिक बना दिया। Because if there is no previous life, if you cannot answer this question, how can there be, where is the justice that somebody has everything, somebody has nothing? There must be nobody in charge up there. तो इसमें कहाँ justice न्याय involved है कि किसी को इतना पीड़ा मिल रही है, किसी को कुछ और मिल रहा है, तो यानी कोई ऊपर सिस्टम ही नहीं है। It's impossible to understand a benign God who loves everyone in the presence of suffering and evil in this world. Benign. If there's only one life. अगर एक ही जीवन है, तो भगवान को समझना तो असंभव है कि किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। एक तरफ बहुत ही लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है और दूसरी तरफ बहुत ही punish किया जा रहा है। You cannot understand if there's only one life why a little boy has to suffer like this. कि अगर एक ही जीवन है तो इस नन्हे बालक को क्यों इतना सफर करना पड़ा? We can understand. हम समझ सकते हैं very easily. बहुत सरल है। Kamana Devanechana, Krishna says it. Sri Bhagavata Purana, it says in Srimad Bhagavatam, Kamana Devanechana. According to his activities in the past life, he is achieving a particular body in this life. श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि पुराने जीवन में कार्यों के अनुसार उसको इस जीवन में शरीर प्राप्त हो रहा है। And fate, providence is nothing but the result of our own doing. और जो तकदीर है वो आपके किए गए हुए कार्यों का फल ही है। Providence is not accidental. ये कोई अचानक वाला कुछ नहीं है। Providence is not unfair. और वो अनफेयर भी नहीं है। Everybody reaps what he sows. हर कोई अपने ही किए गए कार्यों का फल भोगता है। But you have thousands of people, millions of people who have no answer and still they're practicing this religion, that religion, although there's no answer. और आप संसार में हजारों लोगों को देखेंगे जिनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर भी वो धर्म का पालन। Why do you follow something if there's no answers? आप क्यों किसी चीज का पालन करते हैं जब उसका कोई उत्तर ही नहीं है? I've stopped following when I was 12 years old. I could understand with 12 years. There's no answer. What is the use to follow? जब मैं 12 वर्ष का था तो समझ गया कि इसका उत्तर ही नहीं है, तो मैं इसका क्यों फॉलो करूं, पालन करूं? This is the thing. If there's no understanding of soul, you cannot understand what every rickshaw in India understands. If you suffer, it is due to past life. तो अगर आपके पास आत्मा की समझ ही नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं। भारत में तो हर रिक्शे वाले को पता है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आपने पहले कुछ गलत कार्य किया है। Therefore, you have to take. ज्ञान है एक पूर्ण स्रोत से लेना प्राप्त करना। And we should not listen to our mind. अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। So, Prabhupada, he gave us this knowledge because he's coming in the Guru Parampara, and it was very powerful, his deliverance, because he would follow his teachings. और श्रीला प्रभुपाद ने हमें ये ज्ञान प्रस्तुत किया क्योंकि वो गुरु परंपरा के अंतर्गत आ रहे हैं, और अगर आप इस ज्ञान का पालन करते हैं तो बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव है। Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Yeah, any question? Thank you, Prithu, very much. I just wanted to seek more clarification because last time we gave a lecture in Mayapur, you mentioned the same thing, opening bottles and then now closing it. So in that context, the current context, said so many things. We start with the same, don't close that bottle, and then what is the consequence? Don't. You see, the whole, if you look at the environment, the food is poisoned, the rivers are poisoned, the oceans are poisoned, the air is poisoned. Everything is poisoned because they know how to open bottles but they don't know how to close them. The whole environmental catastrophe you can reduce to this one thing. They know how to open but they don't know how to close it. Nobody knows how to solve this mess the scientists have put us in. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि हर एक को बोतल खोलना आता है, बंद करना नहीं आता, तो इसका क्या परिणाम होता है? तो प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि आप देखें, चाहे पानी का प्रदूषण हो, हवा का प्रदूषण हो, जितना खाना है उसमें पॉइजन भरा हुआ है। ऐसा क्यों?
जितना का जितना ये पूरा मैस है, लोग वैज्ञानिकों को चीजें उत्पन्न करनी आती हैं, परंतु उसका क्लोज करना नहीं आता। They know how to open bottles, they don't know how to close it. तो बॉटल खोलनी आती है, बॉटल बंद करनी नहीं आती। That's why this was the last thing Prabhupada, second last thing Prabhupada said, very important instruction. Like even our movement, sometimes we are introducing things that Prabhupada never introduced. अपने आंदोलन में भी हम ऐसी ऐसी चीजों को ला रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं उसको इंट्रोड्यूस किया। Particularly in Western countries. Sorry? Particularly in Western countries. और विशेषकर पाश्चात्य देशों में। In Western countries, very few people know how to be a wife, how to be a husband, how to be a mother, how to be a father. बहुत ही कम लोगों को पता है कि किस प्रकार से पत्नी रहे, किस प्रकार से पति रहे, किस प्रकार से माता रहे, किस प्रकार से पिता रहे। What is the function of the uncle? What is the function of the grandfather? Everybody knows in Vedic culture. वैदिक सभ्यता में सबको पता था कि एक दादा का क्या रोल होता है, चाचा का क्या रोल होता है। In Russia, people know because it's still more a traditional society. रशिया में लोगों को पता है क्योंकि अभी भी वहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटी है। But in Europe, nobody knows. यूरोप में किसी को नहीं पता। And so people don't know whether they're men or women. तो यही नहीं पता कि वो पुरुष है स्त्री है। In Denmark, they introduced a law that every month you can apply for another passport as a male or as a female. वहाँ पे एक ऐसा लॉ है कि हर महीने आप एक नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं। In one month you're Stefan, in the next month you're Stephanie. एक महीने आप स्टेफन हैं और अगले महीने आप स्टेफनी हैं। Pagal, katam pagal. पागल लोग। Any other question? Yes. How mind control in Krishna consciousness is different from Judaism? Mind control. How mind control is different from Judaism? In Krishna consciousness, mind control is Zen Buddhism. Jain Buddhism. Yes, they're good at controlling the mind. You know, How is they're it different from Krishna consciousness? Huh? You're saying how is it different from Krishna consciousness way of because they control? have no concept of soul. They think the identity, my identity is the mind. वो अपनी पहचान मन से करते हैं क्योंकि उनके पास आत्मा They का don't कोई reach स्तर नहीं। to this transcendental level. उनके लिए दिव्य स्तर मन है। So in that sense, it's not even, it's impersonal, but they don't have even the impersonalists, the Mayavadis have a concept of soul. They understand what is soul, Atma. ये मायावादी भी तत्व भी नहीं क्योंकि मायावादी लोग कम से कम आत्मा पर तो मानते हैं। So in Western countries, you don't have a defined understanding what is soul in Western religiosity. पाश्चात्य देशों में आत्मा के उसमें कोई समझ ही नहीं है, कोई डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग। Thank you very much, Hare Krishna. Srila Prabhupada. इस प्रकार प्रभु जी के